الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I welcome all of you to the 19th module of the 6 months diabetes course, which is going to be held in collaboration with Pakistan Academy of Family Physicians and Pakistan Society of Internal Medicine. Today's topic of discussion is reversal of type 2 diabetes mellitus, myths and realities. Our panelist today is Dr. Qamar, and he is Associate Professor and Head of Section of Endocrinology and Department of Medicine, Aga Khan University, Karachi. He is awarded Fellowship of American College of Physicians and Fellowship of American College of Endocrinology in 2011. Second panelist is Dr. Tariq Mahmood Mian, Consultant Family Physician and President Pakistan Academy of Family Physicians. I request him to have a seat on the stage. Today's worthy speaker is from Karachi, Professor Dr. M. Zaman, Sheikh. His diabetes and endocrinology degree is from University of Glasgow. He is founder member of Diabetes in Asian Study Group and Middle East North Africa IDF region. He is also course director of this diabetes program, which is going to be arranged with PSIM and Pakistan Academy of Family Physicians. Now I request Dr. M. Zaman Sheikh to have his lecture on reversal of type 2 diabetes mellitus, myths and realities. Okay, just a minute, please. Sorry, can you see screen? Hello? Hello? Am I audible? Hello? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you very much. First of all, I'm grateful to Dr. Tariq Mian for organizing this course. And he's the focal person, of course, and I'm part of this course. And I'm grateful to PSIM for acting as umbrella in these academic activities. And I'm grateful to Professor. Sorry, is there any problem? No, sir, it's fine. Okay. So I'm grateful to Professor Qamar Masood and Dr. Tariq Mian for joining as panelists. So let us talk today about is type 2 diabetes is reversible. So many myths and misconceptions they are there. So we will talk, is it possible? What is the evidence up till now? So let us see. Now these are top 10 research projects all over the world. Just a minute. Can you hear me without earphone now? Yes, sir. Please respond. Yes, sir. You are audible. So these are top 10 research works, projects which are being done all over the world. So top on the list, you see burning topic of today
is type 2 diabetes reversible or curable? So we are talking on this very important topic today. Some people with type 2 diabetes can become non-diabetic again, at least for a time being. And this is called remission. It's not a cure. Cure means permanent remission and permanent cure treatment. So please don't confuse cure with remission. Because if you stop all these measures, then diabetes may recur. Remission will allow a person to stop all the medication, whether oral hypoglycemic agents or insulin, and we know they are very expensive. And it is inconvenient to take these medication, especially insulin. And whatever we say, but every drug has got some sort of side effect as well. For people who achieve a long-term remission, the effect will be, for people who achieve a long-term remission, the effect upon quantity of life and quality of life, both morbidity and mortality, will be amazing. So we will see this in detail later on. Nowadays, 488 drugs with 70 generic compounds are licensed for the management of type 2 diabetes. Huge number of drugs they are available. And they exclude insulin, plus more than 24-hour seeking license they are in pipeline, plus much more in the developmental phase 2 trial, 1 trial, 2 trial, like once weekly insulin and so on. So let us see, in spite of these great achievements, life expectancy is still reduced by type 2 diabetes. We have got so many drugs for glucose, for lipids, and for hypertension, but even then you see 5-year reduction in male if they develop diabetes, and about 6-year reduction in lifespan in women if they become diabetic. And weight gain is the major driver of type 2 diabetes. We know more BMI, more chances, more prevalence of developing type 2 diabetes. In 90% of type 2 diabetic patients, they are obese, overweight or obese, we know. So first impression came of diabetic remission from bariatric surgery. And these are 2 studies done on bariatric surgery patients. Gastric bending, 75% remission in this study, and 78% remission in this meta-analysis done on more than 4,000 persons. So initially we used to think that it is bariatric surgery, which is the only mean to reverse the diabetes, at least for a couple of years. This is another study in this bariatric surgery study with gastric band. 83% patient, they achieved the goal, and goal was 15 kg reduction in the body weight, because with this reduction, remission is possible. Although remission starts after the reduction of 10 kg, but it is not so prominent. After 15 kg, it becomes very prominent. So roughly 15 kg is our goal for reduction of body weight to achieve the reduction. Now we see in these patients 73% reversal of diabetes remission as compared with only 13% with conventional group. So now the $1 million question: is type 2 diabetes reversible without bariatric surgery with any other means? So actually this is the topic today. So let us talk about two regarding this. One is study, other is retune study. Now aims of direct study to assess whether intensive weight management with routine primary care. Now this word is very important. It is not double-blind placebo-controlled study
it was clinical study, real life study, would achieve remission of type 2 diabetes. Design open label cluster randomized clinical trial, randomized by family physicians with the help of course, dietitian and nurses. The two intervention groups, one is intensive and other is conventional. Now target was to achieve more than 15 kg body weight and plus best practice care by guideline, and in other group only best practice clinical care, no weight management program. This study was done actually at Glasgow, and Ray Taylor from Newcastle upon Tyne and Professor Mike Lean from Glasgow University, they initiated this great study, which proved first time that with medical means remission of diabetes is possible. Now it has got three phases. So at the start of total diet replacement, stop all the drugs, because only then you can assess the benefit of total diet replacement. If you take medication, then this is useless. So let us begin. For first 3 months, only total diet replacement. Now this word is very important. I will explain more. For coming 2 months, then they reintroduced normal food gradually, bit by bit. How I will show you in coming slides. And then for coming 2 years, weight loss maintenance phase, with 1 to 2 monthly appointments. Now here you see practice nurses, dietitian program delivery, and they needed only 8 hours of training, very short training in their own clinic. And they are on job training. They were doing their own job, and they started this training and started this study with obviously royalty checks. Now, direct intervention, I mentioned there are 3 phases. One is total diet replacement. Now, this is very important. For first 2 months, they only gave them shakes, standard milk shakes and other shakes. To make it standard, because if we say any person they take 500 600 calorie diet per day, then some might take more protein, some may take more type of protein, different type of protein, different type of lipids, maybe more lipids, less or more carbohydrate. So to standardize this, they made shakes with trade names, and they used these flavored, tasty, very delicious shakes and soups, and they give only this no food, normal food, for first 2 months. And then they gradually introduced normal food, 400 kilocalorie meal every 2 to 3 weeks, with step counters gradually increased physical activity. Initial activity was 30 minutes per day, with stopping all the drugs. Sorry. Now third phase, as I mentioned, was long phase of 2 years, maintenance phase. It was food-based mainly, plus minus meal replacement. So small portion of these soups and shakes, but they introduce food, normal food gradually. And here you see composition was different. Initially 61% carbohydrate, 13% fat, 26% protein. But in this is very difficult. In order to make tasty, they made carbohydrate more. But gradually they reduced carbohydrate to 50% and increased this fat, mainly healthy fat, like monounsaturated fat or saturated fat, but organic, which we use in Pakistan, like desi ghee, makhan type. They are also saturated, but they are natural saturated fat. And 15% protein, they reduce the protein. They offer a relapse management. Okay, if there was relapse, means regain of 2 kilogram, then they introduced either some medication to reduce the body weight, or briefly restarted total diet replacement in form of shakes and soups. So this is one example of delicious soups
and shakes and the juices. Now result. Weight change over first 12 months. You see great reduction, and not only reduction, but maintenance. But when they drop out in any phase of this trial, 3 phases, then you see there is regain of body weight, although it continued. Now result started coming. First primary outcome was, we know, more than 15 kg, and secondary primary outcome was, this was weight loss, this is remission of diabetes. So 2 primary aims, and both were achieved. P-value 0.001 here, weight reduction achieved. And remission of diabetes also achieved. This was the great news for the first time in medical history, that besides or apart from bariatric surgery, this is possible. P-value quite significant for remission of diabetes type 2. Okay, now we see remission by 12-month weight loss. As I already mentioned, remission started from 10 kg, but it is only 57%. But if it is more than 15 kg, 86%. And if we combine this, 73%. Now we notice that 73% reduction is almost same as we saw in bariatric surgery. So this is the great achievement. Now, diabetic remission at 12 and 20, this is also good news. That for first year, end of first year, 46% achieve remission, but it continued, although a bit less, is for second year, 36%, and p-value again is quite significant. Now, let us see secondary outcome. Those were primary outcomes: weight reduction, 15 kg, and remission of diabetes. Now, these are secondary outcomes, and you see body weight, HbA1c, percentage on anti-diabetic medication, percentage on anti-hypertensive medication, triglyceride, and quality of life. And you see p-value is significant in every parameter. Now, blood pressure also came down significant. Quality of life very much improved. You reduce the body weight, and if, particularly if remission in type 2 diabetes achieved, then this is the great news for a person with type 2 diabetes. Now, direct study conducted in real life primary care setting, no artificial environment like double-blind, placebo-controlled type study. No extra clinical stuff was needed. In Pakistan, this is particularly important. So we, if we want to start this type of study, we can select some primary care centers and start this type of study without any extra budget. But they need staff training, which was 8 months, and support, of course. Now, this study was limited to UK only. Newcastle upon Tyne and Glasgow. They need trials in high-risk group elsewhere, like in Pakistan. So direct study, around 10% of people with type 2 diabetes say BMI, which puts them in healthy range. 10%, 90% are overweight or obese. But surprisingly, 10% they are of normal weight, but they've got type 2 diabetes. It is still a mystery, but this mystery is being resolved nowadays, and we will talk on this as well. However, people with lower BMI may still store internal fat in pancreas and liver. This is very important. Now we are talking about liver fat, fatty liver, and non-alcoholic fatty liver, and so on. But we forget, or we underestimate, or we don't know fat inside pancreas. It is fatty pancreas as well, which is responsible for type 2 diabetes and insulin resistance in these 10% of people with type 2 diabetes who are thin by definition.
This could be one of reasons why these people develop type 2 diabetes. So to solve this mystery, another study was done, and it is retune study. Now this study was done by the main author was Ray Taylor from Newcastle upon Tyne, one of partner of direct study, rather major author of direct study. Now, testing if people with BMI below 27. Now, this is European criteria, not Pakistani criteria. Our criteria is 23. So, if we want to do study in Pakistan, then we have to take this as 23, not 27. Can lose internal body fat and go into remission by following a low. Same. If we cut down calories and the proportion of meal may be appropriate, then same result can be found. Let us see more. Professor Ray Taylor and his team studied whether a low-calorie diet can help these so-called non-obese people with type 2 diabetes to put their condition into remission. And 75% of normal weight participants also achieved type 2 remission in those thin patients, 75%, same figure. Now, result of retune study remission, plain decreased in body weight from 69 to 61, total body fat from 33 to 27, fasting blood sugar from 135 to 116, HbA1c from 7.1 to 6.5, fasting plasma insulin, great reduction 50 from 50 to 23, plasma triglyceride also decreased, liver fat also decreased, pancreatic field also decreased back to normal with this regimen, and p value all you see important. Now, methods in two studies, direct study, retune study. A large study of type 2 diabetes in people with BMI more than 27. And a retune study, a detailed study of type 1 mechanism in people with less than 27 kilogram BMI, kilogram per meter square. And this is European Caucasian standard. Measurement of liver and pancreas fat by 3-point Dixon 3T MRI. Now I may tell you background. Ray Taylor was in Newcastle upon time. His portfolio and assignment was changed. He was made director of MRI unit. And during his tenure, latest, a new machine of MRI came in his center, latest machine, which was able to calculate pancreatic cell inside pancreas fat quantitatively. So he decided to start this study and to check pancreatic fatty cell like we are seeing in liver fatty cell. 15 kg weight loss on 700 kilocalorie diet, normalized beta cell function. This is amazing. Beta cell function started secreting insulin once again and pancreatic cell. Now, these are two conclusion tables from retune study. And you see pancreatic cell, fat cell, they start decreasing. And with this, first phase insulin response improved, came to normal. Great news, actually. Now, lastly, let us talk about low carb diet, because I know some intelligent participant will ask this question, because this question was also asked by me previously. So I decided to talk few words about low carb diet. And this is a relatively new concept. Now, I may tell you, this is not a new concept. Before 1921, before insulin, actually, this was the main regimen, dietary, because no drug was available. First came insulin in 21, then came sulfonylurea, then came metformin. So before insulin, no treatment. So people used to give whiskey to the diabetic patient, because whiskey or alcohol, strong alcohol, it decreases glycogenolysis. Because
the liver is fighting with the toxic effect of ethanol. So glycogenolysis becomes less. So less pouring of glucose from liver into blood stream. So there is hypoglycemia. So whiskey was used as a therapeutic agent. Likewise, very low carbohydrate diet at that time, this was used because scientists knew, they knew that if you give less carbohydrate, then there will be less secretion, less burden on the pancreas. So less insulin will be produced, and hyperinsulinemia, which is a marker of the insulin resistance, become less. So this was initially a famous dietary regimen for the management of diabetes before era of the insulin. But the fat restriction, कि मुर्गन खाने नहीं खाओ, and take less fat because fat contains 9 calorie per gram, carbohydrate content and protein content on 4 calorie per gram. So then we knew, and when we were young doctors, I was young doctor at least, this was a famous regimen, by boil cow, fat khana chhod do. Now this was wrong because in place of fat, both monosaturated, saturated fat, whatever it is, we used to take carbohydrate because we have to take anyhow some calories to maintain 15 to 1800 calories per day. So either you take protein, which is very difficult all the time. You cannot take protein, and it is expensive, more expensive, we know. Instead of low fat, we used to take more carbohydrate, which is actually more harmful. So trend is again changing. Now we are again on low carb diet, and so many studies have been done. Some are only few week study, some are 1 year study. But it's very difficult to take low carb diet for a longer period of time. For 6 months, okay, but after 6 months, people they are exhausted. They are not ready to take so much less fat. So it is low carb means so many things. Number one, and with low carb, you can take some vegetables, some fruits. You can take, although they are carbohydrate, but they are complex carbohydrate. So you can take carbohydrate in form of vegetable, in form of grains. ये जो दालें वगैरह होती है, lentils, ये ले सकते हैं लो कार्ब डाइट में. फ्री शुगर बिल्कुल बंद. And number two, fat should be taken to some extent, not too much extent, because otherwise it will be ketone diet instead of low carb diet. But fat, there are of two types. Not only monounsaturated fat, which is more beneficial, we know from olive oil type things, but saturated natural source, like in villages we take desi ghee and makhan type thing, they can be added when you take fat and low carb diet. Similarly, protein, obviously we have to take, but not so much that it becomes Aitken diet. So there is difference between ketone diet, Aitken diet, and low carb diet. Now, these are so many studies have been done in low carb diet. These are two famous studies, VERTA program for 1 year, very famous, and primary goal was remission was achieved in this study, along with so many secondary benefit and same benefit which I mentioned in direct study. Other is a study by Sood et al. So effect of weight loss on complication of diabetes, greater weight loss and overall more health improvement. So now if you lose some weight, then benefit on hypertension and hyperglycemia. If you lose more weight, then more benefit we see. Prevention of type 2 diabetes,
And you see, if there is even more reduction in the body, then more benefits, like benefits on cardiovascular system, urinary stress incontinence, NASH, and osteoarthritis. But if you achieve more than 15%, as we saw in direct study, retune study, then remission. Cardiovascular mortality will be less, and heart failure will be less. So let us talk again on life expectancy is still reduced by type 2 diabetes. This is the same slide which I show you. 5-year less lifespan in male if they develop type 2 diabetes. And 6 in women. Women are more prone. But when you reverse the diabetes for a couple of years by medical means, which is really not so difficult if our determination will be more, for 1-2 year we can achieve this certainly, then you see life expectancy become normal. I will show you in the coming slide. So all the complication which will develop if there is hyperglycemia, there is no hyperglycemia for 4-5 years, suppose, then complication will be delayed or they will not occur. Moreover, you are successful in cutting down all the prices, all the cost of fees of the doctor, doing so many investigations because your blood sugar is normal. Why to go to doctor? Why to do these investigation? And much more important, you are successful in cutting down all the medication because there is no sugar. Why to take medication? And even not only the diabetes, but the hypertensive medication, cholesterol medication, they also will be cut down. And you see life expectancy, if blood sugar is normal with this study, direct study, if 15 kg weight loss, then life expectancy is same because there is no diabetes now. Now, criteria for remission. Now, I used word remission again and again. What is the criteria? Again, there are so many criteria, suggestions, guidelines, and obviously we have to take one or two, which suits us, which are easy to remember and easy to practice. And these are less than HbA1c less than 6.5, fasting blood sugar maximum 126, preferably 800, and this is maintained for 1 year. Now, this is one very important criteria for remission. There are other criteria as well. Now, medical benefits of diabetic remission: remove need for lifelong multiple drug treatment, and cardiovascular risk factor, blood pressure and lipid improve or normalize, reducing need of for medication for blood pressure and lipids as well. Multi-system improvement in health and quality of life is improved, as I mentioned in one of my previous slides. Value of appropriate coding for patients, epidemiology and health care planning. It removes personal and social stigma that I am diseased 24 hours a day, whole life with diabetes. So this stigma is no more there. I'm not diabetic. My sugar is normal. It provides a target and renewal for sustained hard work. Avoid high cost, as I mentioned. Remove some occupational restriction, like in pilots. If blood sugar is high, they cannot fly. But if blood sugar is normal, only metformin is allowed with them, we know. But if blood sugar is normal, they can resume flying and operating complicated machinery because there is no more diabetes. So great, this benefit, occupational joblessness. Identify a variable indicator of success in healthcare through national register monitoring. Now, last slide, remission should now be primary aim of diabetes care. Almost half can achieve remission, 73% with more than 10 kg loss. Over 15 kg loss is rarely necessary. This is maximum. Offer optimal non-surgical
weight management early before surgery. Now, is it possible? Hello? Hello? No, you are audible. Hello? Yes, sir, you are audible now. Hello? Hello? सर आपकी आवाज आ रही है अब। अच्छा, पहले आ रही थी ना? पहले थोड़ी देर के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, अब आ रही है। नहीं, मेरे लेक्चर के दौरान तो आ रही थी ना? हाँ जी, वो सारी बिल्कुल सही। ओके, गुड। हाँ, लास्ट 2 स्लाइड जो है ना उसमें प्रॉब्लम आई है। ओह, आई एम सॉरी। वो चले, वो ऐसे ही थी, वो थोड़ा लाइट मूड में था, तो फिक्र नहीं है। ऑनलाइन आए हैं वो प्लीज भेज दें। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर जमान शेख साहब फॉर एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। क्वेश्चंस हम भी लेते हैं, जो लोग फिजिकली मौजूद हैं वो कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं। जी, क्वेश्चन, यस, वेलकम। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड फैटी पेंक्रियाज। पूछ रहे हैं कि लो बीएमआई में फैटी पेंक्रियाज का क्या रीजन है। वेरी गुड। वन बाय वन। जी, डॉक्टर साहब देखिए, हाँ, फैटी पेनक्रियाज का रीजन तकरीबन वही है जो लिवर फैट का है, फैटी लिवर का। इट इज पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मगर ये ज्यादा सेंसिटिव है। इन फ्यूचर वी सी दैट वी विल यूज दिस टर्म मोर ऑफन, पेनक्रियाटिक फैट, क्योंकि पहले तो हम पेनक्रियाटिक फैट का कोई तवज्जो देते ही नहीं थे, अल्दो इट इज पार्ट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, और वो शुरुआती स्टेज पे है। जब अभी लिवर फैट जमा नहीं होता, फैटी लिवर भी नहीं होता, तो इवन थिन पर्सन्स में भी पेनक्रियाटिक फैट जो है वो अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। मैकेनिज्म वही है जो लिवर फैट का है, फैटी लिवर का, मगर इट इज मोर सेंसिटिव। एंड देखे ना, 10% पहले हमें पता नहीं था कि भाई ये दीज आर थिन पर्सन्स, व्हाई दे डेवलप टाइप 2 डायबिटीज, कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता था, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पहला जो है कीवर्ड वो है सेंट्रल विसरल ओबेसिटी। जब विसरल ओबेसिटी है ही नहीं, तो व्हाई दे डेवलप मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब पता चला कि नहीं, जिस तरह प्री डायबिटीज एथेरोस्क्लेरोसिस है, देखिए 30 ईयर के बाद एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाता है, हम नोटिस करते हैं 50-60 साल के बाद, और इवेंट आता है 40 साल के बाद। एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो गई, मैं तो कहता हूँ कि वो 20 साल से स्टार्ट हो जाती है थोड़ी बहुत, मगर इवेंट आता है 40 साल के बाद। इस तरह पेनक्रियाटिक फेट ज्यादा सेंसिटिव है, वो स्टार्ट हो जाता है। और प्री डायबिटिक और डायबिटिक तो लेटेस्ट स्टेज जो है, हम तो कहते हैं प्री डायबिटिक पहली स्टेज है, प्री डायबिटिक तक पहुंचते पहुंचते हम बहुत लेट हो जाते हैं। वी आर वेरी लेट इन प्रिवेंशन तो छोड़े, रादर मैनेजिंग टाइप 2 डायबिटीज। तो अब वो आ गया है, देखिए ना, पहले हम कहते थे प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्शरी, अब हम कहते हैं प्राइमरी नहीं भी, प्री मॉडल। प्री मॉडल आपको शुरू में ही प्रोसेस, सब जो प्रोसेस है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस है या पेनक्रियाटिक फेट है, इस तरह के उनको रोकें, स्पेशली दोस हु आर प्रोन टू डेवलप दिस मेटाबॉलिक सिंड्रोम या टाइप 2 डायबिटीज, जैसे फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग मेल जेंडर है, या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ओबेसिटी, ऑफ कोर्स जितनी भी ओबेसिटी है, देखे ना, ओबेसिटी वहाँ 27 ओवरवेट है, हमारे यहाँ तो ओवरवेट 23 से स्टार्ट हो जाता है। तो अब वो जमाना आ गया है कि
not only primary prevention but pre-mortal prevention होनी चाहिए, और ये पेनक्रियाटिक फेट उसी सिलसिले की एक कड़ी है। Next question, diabetes is a disease of food or something else? Food, Food. very good. Food यानी न्यूट्रिशन। एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखें, कोई कहते हैं कि भाई आप शुगर ज्यादा खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी, तो हम देखते हैं भाई कोई 4 चम्मच, मैंने देखा है खुद, 1 कप चाय में 4 चम्मच डाल के पीते हैं, और हम पे हंसते हैं कि डॉक्टर साहब आप कहते हो मैं 4 चम्मच पीता हूँ और कोई कुछ होता है। तो मैं कहता हूँ भाई स्मोकिंग जो करते हैं सबको कैंसर थोड़ी होता है, स्मोकर जो भी हैं 100% को तो कैंसर नहीं होता, कई ऐसे हैं कि चेन स्मोकर है, कैंसर आखिर तक नहीं होता। तो एक्चुअली देखें ये चीजें जो है ना, ये जेनेटिक प्लस एनवायरमेंटल है। तो टाइप 2 डायबिटीज है जेनेटिक प्लस एनवायरमेंट। अब रेशियो जो है वो डिफरेंट रेसेस में डिफरेंट है, मगर हम एक अगर एवरेज लें तो वी कैन से दैट 50% इज जेनेटिक, 50% इज एनवायरमेंटल। अब जीन्स तो आ गई, अब हम वालिद साहब को नहीं कह सकते कि अब वो अपने गाड़ी नहीं छोड़ी विरसे में, बंगला नहीं छोड़ा, आपने छोड़ा भी तो डायबिटीज छोड़ दिया हमारे लिए, तो ये तो हम नहीं कह सकते वालिद साहब को या वालदा को, मगर वो डन इज डन, खत्म, इरिवर्सिबल। मगर जो 50% है माहौलियाती एनवायरमेंटल फैक्टर जिसको लाइफ स्टाइल कहते हैं, और फूड उसका इसेंशियल पार्ट है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कीवर्ड जो है ना वो अभी भी विसरल ओबेसिटी है, रिडक्शन ऑफ बॉडी वेट है। चलो 10% में नहीं है, 90% में तो ओबेसिटी है। तो वेट रिडक्शन विथ हेल्प ऑफ फूड डाइटिंग, विथ हेल्प ऑफ लाइफ स्टाइल, और सेडेंटरी जितना भी हो सके उसको चेंज करे। मैं तो कहता हूँ गाड़ी थोड़ी दूर छोड़ के थोड़ा पैदल चले आदमी बेहतर है, और जहां भी पॉसिबल हो सीढ़ियां अगर हैं तो वो अप स्टेयर चढ़े, बाय स्टेयर्स। इस तरह घर में भी या बाहर भी जितनी वॉक करने का चांस मिले वॉक करे। देखिए ना, ये है अनप्लानिंग एक्सरसाइज। एक है स्केड्यूल जो हम करते हैं 20 मिनट 30 मिनट। अनप्लान्ड एक्सरसाइज भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम अपनी आदत बना लें कि भाई पानी पीना है, बजाय किसी को आवाज दो कि भाई पानी पिलाओ, आप उठ के खुद पानी पियो, तो एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। आप बार बार रिमोट कंट्रोल चलाते हो तो दूसरी जगह जाके कभी जाके बटन दबाया करो आप उठ के। तो कई तरीके ऐसे हैं कि हम बीच बीच में एक्सरसाइज अनप्लान्ड कर सकते हैं। अच्छा, और इस तरह फूड का भी है कि फूड में देखें ना 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक कम खाएं और वो भी सोच समझ के खाएं, एक है क्वांटिटी एक है क्वालिटी। अब आप कम खाओ मगर जो भी खाओ सोच समझ के खाओ। अब कम खाएंगे मगर हर वक्त बिरयानी और गोला कबाब और नहारी पाए खाएंगे तो थोड़ा भी बहुत है। तो डाइटिंग भी बहुत, और देखे ना सख्त डाइटिंग की जरूरत नहीं है अभी, वो चेंज होते जा रहे हैं कंसेप्ट। आप नाश्ता थोड़ा हेवी करें, रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले खाएं, और जो फैट है तो फैट जरूर खाएं आप। ये गलत है कि आप बॉयल खाओ, बॉयल खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट खाते रहेंगे जो और वर्स करेगी डायबिटीज और ओबेसिटी। तो आप मोनो अनसेचुरेटेड फैट खाओ, और कंसेप्ट चेंज होते जा रहे हैं अभी। अभी हम कहते हैं कि जो देसी घी वगैरह, हम देखें ना, हम अपने बड़ों को याद करें, बाप दादा को, सच देसी घी खाते ही देसी घी थे, और उनकी उम्र 80 साल होती थी आराम से, और आखिर तक मोबाइल होते थे एक्सरसाइज की वजह से। और दूसरा ये जो भी खाते पीते थे। तो सेचुरेटेड फैट को 2 में डिवाइड किया है हमने, एक जो ऑर्गेनिक फूड है जो नेचुरल हम खाते रहते थे गांव में, और दूसरा है प्रोसेस्ड फूड जो हम बर्गर की शक्ल में या पिज्जा वगैरह की शक्ल में खाते हैं। दोनों सेचुरेटेड हैं, एक बहुत ज्यादा हार्मफुल है, एक कम हार्मफुल मैं कहूँगा नहीं है अगर मॉडरेशन में खाया जाए तो। थैंक यू सर। हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद कमर मसूद साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने कमेंट्स दें इस लेक्चर के मतलब और एक्सरसाइज के मतलब भी कुछ बताएं अबाउट एक्सरसाइज इन डायबिटिक्स। जी अस्सलाम वालेकुम।
होपफुली आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। Yes. जी, तो डॉक्टर जमान साहब, फर्स्ट आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू। बहुत जबरदस्त टॉक थी, बहुत मजा आया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और मैं साथ साथ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन और अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस पाकिस्तान को भी कांग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर और बहुत इम्पोर्टेंट ये काम कर रहे हैं, इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। तो डॉक्टर साहब की जो पूरी, जैसे कहना चाहिए मैं जिस्ट कहूँ उनकी टॉक का, तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल और वेट लॉस एक बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे कहना चाहिए कि फैक्टर है डायबिटीज रिमिशन में। इसको डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं एक दफ़ा एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वॉइस ऑफ अमेरिका की, और वो 1965 की डॉक्यूमेंट्री थी अबाउट पाकिस्तान। तो उस वक्त जो लोग रोडों पे चलते फिरते हमें नजर आ रहे थे और मतलब एक काम कर रहे थे मार्केट्स के अंदर और या फिर फील्ड्स के अंदर काम कर रहे थे, तो वो बिल्कुल लग रहा था कि शायद किसी दूसरी दुनिया के वो मखलूक हैं जो आजकल जो लोग नजर आते हैं हमें उनसे बिल्कुल बहुत डिफरेंट थे। तो रियली हम देखा जाए तो एज अ नेशन जो है हम लोग ओबीस हो गए हैं, चाहे इसको हम रियलाइज करें कि ना रियलाइज करें, एज अ नेशन हम ओबीस हो गए हैं और इसी वजह से दुनिया में नंबर 3 पर आ गए हैं डायबिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे डॉक्टर साहब ने नैश के बारे में बात की, पेनक्रियाटिक फैट के बारे में बात की, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये सारी चीज़ों का रिस्क जो है ओबेसिटी के साथ बहुत बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ डॉक्टर साहब ने इस पर बात की कि हम वेट लॉस अचीव करें। जो बीएमआई हैं और ये सारी एक रिलेटिव टर्म्स है ना, तो जैसे बात हो रही थी कि क्या 23 से बीएमआई पे पेनक्रियाटिक फैट क्यों हो रहा है, तो ये भी एक रिलेटिव, जैसे कहना चाहिए, चीज़ें हैं। होम मे बी फॉर सर्टेन पॉपुलेशन इवन 23 बीएमआई में भी जो है उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, या जो स्टडीज़ पेनक्रियाटिक फैट की थी वो तो 27 बीएमआई से लेस वालों के अंदर उनको डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि उनको नॉर्मल वेट कहा गया। तो रिलेटिव टर्म्स हैं, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल आई थिंक सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो पर्टिकुलरली हम ओबीस हैं उसके अंदर वेट लॉस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एक, जैसे कहना चाहिए कि डायबिटीज़ के रिमिशन के अंदर भी और डायबिटीज़ के प्रिवेंशन के अंदर भी जैसे कहना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट उसका रोल है। तो इसलिए आई थिंक जो हम जब डायबिटीज़ को देख रहे हैं क्लिनिक्स के अंदर मैनेज कर रहे हैं, वहाँ साथ साथ हम एड्रेस वेट को भी एड्रेस करें। जैसे कल ही के मैं अगर एग्जांपल दूं तो मेरे पास एक खातून आई जिनका A1C 7.2% उनका HbA1c था एंड उन्होंने मुझे डायबिटीज़ के लिए दिखाने आई। तो मैंने कहा डायबिटीज़ तो मुझे आपका कोई इतना बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो आपके वेट के हिसाब से आपका 96 किलोग्राम का वज़न है और आपकी हाइट जो है वो यानी 5 फीट से भी कम है, तो ये जो है मुझे सबसे बड़ा मसला तो वेट नज़र आ रहा है। और आगे जो चीज़ आपको जाके परेशान करेगी, तंग करेगी फ्यूचर के अंदर, वो आपका वेट तंग करेगा। तो उस वक्त अगर वेट लॉस हो जाए तो डायबिटीज़ रिमिशन में भी जा सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी की मुझसे कहा गया कि उसके बारे में बात कर लें, तो आई उसमें बिलीव बिल्कुल। हमने लास्ट वीक भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पर एक प्रोग्राम किया था अपने AKU के प्लेटफॉर्म से। तो अगेन फिजिकल एक्टिविटी भी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगी। जहाँ वेट लॉस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगा, वहाँ फिजिकल एक्टिविटी भी मसल्स के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करेगी और पेनक्रियास के ऊपर से बर्डन को इम्प्रूव करेगी। तो वेट लॉस जो है वो ना सिर्फ ये कि हेल्दी ईटिंग, हेल्दी डाइट, बल्कि उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी इज एज इम्पॉर्टेंट। और जो स्टडीज़ डॉक्टर साहब ने दिखाई उसके अंदर भी फिजिकल एक्टिविटी जो था वो पार्ट ऑफ द स्टडी थी और वेट लॉस अचीवमेंट में यकीनन उसका एक रोल होगा। तो इसलिए दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और डायबिटीज़ को ना शुरू से मेरे बाज़ दफ़ा पेशेंट्स आते हैं बिल्कुल जैसे कहना चाहिए रिसेंटली डायग्नोज डायबिटीज़ होती है, उनके अंदर
मैं जो अब तक चीज़ों को प्रमोट करता जा रहा हूँ, जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, साइंटिफिक टर्म्स के अंदर जो डॉक्टर साहब ने बात की और जो स्टडीज़ को कोट किया, उन्होंने तो रिमिशन को डिफाइंड किया कि एज रिक्वायरिंग नो मेडिकेशंस। लेकिन अगेन हम जो देखते हैं दुनिया के अंदर, या हम अपने अपने जो 20-22 साल के अंदर जो एक्सपीरियंस रहा है कि लोग लाइफ स्टाइल्स पर इंटरमिटेंटली आते रहते हैं और बाज़ दफ़ा फिर थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, यानी अच्छा कंट्रोल आ गया, ऑलमोस्ट डायबिटीज़ रिमिशन में चली गई, साल 2 साल तक चीज़ें मेंटेन रहती हैं, एंड देन लोग जिसे कहना चाहिए कि दोबारा अपनी डाइट को और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को, दूसरी चीज़ों को, वो इतने ज़्यादा एक्टिव उसके अंदर नहीं रहते और फिर दोबारा डायबिटीज़ जो है वो रिकर करती है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि तीनों महाजों पर आपको जो है इम्पोर्टेंट है कि आपने डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस भी रखनी है, फिजिकल एक्टिविटी को भी करना है, और लो डोज के अंदर मेडिकेशंस को मैं जनरली बंद नहीं करता, लाइक मे बी वेरी लो डोज ऑफ मेटफॉर्मिन लाइक 750 मिलीग्राम, और इवन समटाइम्स यंग लोगों के अंदर अदरवाइज जो कोमॉर्बिडिटीज ना हो, वेरी लो डोज पायोग्लिटाजोन लाइक 7.5 मिलीग्राम और मे बी 15 मिलीग्राम, उसको ताकि रिमिशन जो है वो मेंटेन रहे। इसके लिए मैं लो डोज के अंदर बाज़ दफ़ा मेडिकेशंस इवन कंटिन्यू करता हूँ व्हेन द HbA1c इज लेस देन 6.5%, क्योंकि और उनको फिर इनकरेज लाइफ स्टाइल के लिए एवरी विजिट पर इनकरेज करना ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आई थैंक यू अगेन, बहुत ज़बरदस्त टॉक थी, बहुत मज़ा आया, रियली एंजॉयड। Thank you, Dr. Qamar. One you. question is for Professor Zaman Sheikh. When weight reduction is the hallmark of reversal of diabetes, why diabetes occurs in thin, lean person? डॉक्टर साहब मैं इसका थोड़ा सा जवाब दे चुका हूं पहले ही, कि देखें थिन लीन पर्सन जो है ना वो तकरीबन 10% है, और 10% में अभी तक ये मिस्ट्री थी कि क्या क्यों है ये, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम शुरू ही विसरल ओबेसिटी से करते हैं कि भाई कि पहले विसरल ओबेसिटी है, फिर फ्री फैटी एसिड है, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, फिर बाकी चीजें टाइप 2 डायबिटीज, फिर हाइपरयूरिसीमिया, डिस्लिपिडीमिया, ऑल हाइपरटेंशन, ऑल लीडिंग टू इस्केमिक हार्ट डिजीज, जो आखिर का एंड है। मेटाबॉलिक शुरू होता है विसरल से, एंड होता है कार्डियोवास्कुलर इवेंट से। तो पहले हम सोचते थे कि ये 10% क्या है, रियली आप यकीन जाने कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक इस आर्टिस्ट ने उठ के सवाल किया, एक एक्सीलेंट टॉक थी गोरे की, और एक ने कहा कि ये जो ये थिन लीन टाइप 2 डायबिटिक है, ये कोई अलग पैथोजेनिसिटी है, क्या है चक्कर। अब देखिए आस्ता आस्ता मिस्ट्री जो है ना वो खत्म होती जा रही है। अब मैं मिसाल देता हूं कि जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था या यंग डॉक्टर था आप लोगों की तरह, तो हम सोचते थे कि 90% ब्लड प्रेशर एसेंशियल हाइपरटेंशन है, 10% सेकेंडरी है। एसेंशियल को हम कहते थे इडियोपैथिक, जिसका कोई पता ही नहीं है हमें कि काज क्या है। अब हम कहते हैं भाई वो एसेंशियल तो वही है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, वही तो एसेंशियल है ना। तो देखिए मिस्ट्री जो है, जो हमारे जमाने में जब हम कई डिकेड्स पहले पता ही नहीं था, अब हमें फुल पता है कि ये दिस इज पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो एसेंशियल हाइपरटेंशन था। तो अब इस तरह पता चला कि भाई ये जो थिन लीन पर्सन है, टाइप 2 डायबिटिक है, इसमें प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और पेनक्रियाटिक फैट जो है वो इवन लिवर फैट से भी पहले जमा होता है। पेनक्रियाटिक फैट पेरेन्काइमा में बीटा सेल के अराउंड, यानी जिस तरह बिल्कुल पैथोजेनिसिटी वही है, बट मच अर्लियर एंड मोर सिग्निफिकेंट एंड मोर इंटेंस। उसके बाद फिर फैटी लिवर होता है, क्योंकि फैटी लिवर तो अल्ट्रासाउंड में भी नजर आ जाता है। पेनक्रियाटिक फैटी सेल देखने के लिए मैंने पहले, शायद आपने अगर जाहिर सुना होगा कि स्पेशल एमआरआई मशीन लेटेस्ट आई थी रे टेलर के इंस्टीट्यूट में न्यूकैसल अपॉन टाइन में, तो उसने ये देखा कि भाई पेनक्रियाज में भी तो फैट सेल भरे पड़े हैं उस एमआरआई मशीन से, जो लेटेस्ट मॉडल है अभी, जो पाकिस्तान में अभी आया ही नहीं है। तो फिर उन्होंने थ्योरी डिस्कवर की और उसको कहा कि भाई देखिए इनमें भी हम देखे ना, पहले ही थिन लीन थे, आप नोट करें कि उसमें और वेट रिड्यूस किया, तो अचीव हो गया टारगेट, रिमिशन में वो भी चले गए।
रीट्यून स्टडी वही है कि थिनलिन में रिवर्स हो गया। तो पेनक्रियाटिक सेल की ये सिग्निफिकेंट है और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इसके बारे में और बातें सुनेंगे। थैंक यू। Thank you, sir. One question for Dr. Qamar Masood. If parameters are normal, how much depression and anxiety can induce diabetes? देखिए, इसको ना अलग से क्वांटिफाई करना कि कितना कंट्रीब्यूशन है, ये डिफिकल्ट है। लेकिन एंजाइटी, डिस्ट्रेस, पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों का ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल रोल तो है। तो स्ट्रेस हार्मोन्स तो बढ़ते हैं, और जब स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं विच में मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं जैसे कॉर्टिसोल वगैरह, तो ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, ये अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। इसी तरीके से कोई बहुत स्ट्रेस में हर वक्त रहता है तो उसकी जो कैटेकोल अमीन्स हैं वो भी हाई रहते हैं, कॉर्टिसोल के लेवल्स का भी रोल है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो ओबेसिटी है, सेंट्रल ओबेसिटी, इसके अंदर भी इन हार्मोन्स का रोल के बारे में स्पेक्युलेट किया गया है। लेकिन बिल्कुल अलग से क्वांटिफाई करना इट्स डिफिकल्ट। और अगेन हेल्दी लाइफ स्टाइल को इख्तियार करेंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, वॉक हम करेंगे, तो वो हमें स्ट्रेस के अंदर भी और डिप्रेशन के अंदर भी जो फिजिकल एक्टिविटी है दैट शुड आल्सो हेल्प देयर। Thanks, Dr. Sam. I am highly thankful to Professor Zaman Sheikh for a wonderful presentation, and to our panelists, Dr. Tariq Mahmood Mian and Dr. Qamar Masood. I request Dr. Tariq Mahmood Mian for the concluding remarks. हाँ, चलो बोल दो, माइक दे दो। One more question is coming for Professor Zaman Sheikh, sir. सर, आपने कहा कि जो विस्की है या स्ट्रॉन्ग अल्कोहल है वो स्टिमुलेट करती है ग्लूकोजीनोलाइसिस, राइट? ये रिसर्च है, राइट? चलिए आप क्वेश्चन सर, पूरा करें। रिसर्च भी है, मैंने वैसे गूगल करके भी देखा, रिसर्च है इस पे। जी जी जी। फैटी लिवर आपने बोला कि वो रिड्यूस करना जरूरी है, तो अगर अल्कोहल हमारे लिए तो हराम है, तो उसका अदर सोर्स क्या हो सकता है कि हम उसका लिवर फैट रिड्यूस करें? इस पे रिसर्च तो है। जी जी जी, नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपने थोड़ा सा अगर सुना देखा हो ना, तो मैंने ये कहा था कि 1921 से पहले डायबिटीज की दुनिया में कोई दवा थी नहीं, कुछ नहीं था डायबिटीज के लिए। और टाइप 1 डायबिटीज को तो यकीन जाने कि डेथ सर्टिफिकेट साथ मिलता था जैसे अनऑफिशियल, कि भाई मैक्सिमम 2 साल के अंदर तुम कब्र के अंदर होगे। 2 साल मैक्सिमम पीरियड है टाइप 1 डायबिटीज का विदाउट इंसुलिन। तो इतनी खतरनाक सूरत हाल थी टाइप 1 की खासकर, और इवन टाइप 2 की। तो कहने का मकसद ये कि फिर उस वक्त देखिए ना, साइंसदान रिसर्च वर्कर चुप तो नहीं बैठ सकते ना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो पहले डाइटिंग पे जो रोलो एक नाम मशहूर है, रोलो, ROLO। उसके बाद जोसेलिन ने भी डाइट पे बहुत काम किया। तो रोलो वगैरह ने कहा कि भाई आप कार्बोहाइड्रेट बंद कर दो तो आप इंसुलिन तो शुगर ट्रीट हो जाएगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से तो शुगर बनती है। तो उस वक्त उन्होंने कार्बोहाइड्रेट बंद कर दिया था, और उसकी जगह दूसरी चीजें फैट प्रोटीन वगैरह वो देते थे। मगर जाहिर है कि नतीजा तो इमीडिएट तो थोड़ा निकलता है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए तो सही नहीं है। तो इस तरह उन्होंने नोट किया कि अल्कोहल पीने से शुगर वाकई हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना। शुरू देखिए, अल्कोहल पीने से शुरू में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, एंड में फिर वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मगर शुरू में अगर आप उसके साथ खाना न खाएं, अमूमन जो अल्कोहल पीते हैं ना, उसके बाद वो बहुत हेवी डिनर करते हैं दोस्त यार मिलके ना, तो वो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट नजर नहीं आता हमें। अगर सिर्फ अल्कोहल पिए, स्पेशली विस्की जो कंसंट्रेटेड है, तो उसके बाद अगर खाना न खाएं तो लाजमन हाइपोग्लाइसेमिया होगा। क्यों होगा?
कि लिवर जो है, देखिए ना, अल्कोहल है, टॉक्सिन है। आप देखो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करता है, डिमेंशिया करता है, फैटी लिवर करता है, सिरोसिस ऑफ लिवर करता है, पता नहीं, इट इज अ टॉक्सिन, इथानोल। तो लिवर उस टॉक्सिन को फाइट करने में इतना बिजी हो जाता है कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस नहीं कर सकता ड्यूरिंग हाइपोग्लाइसीमिया। वो न करने की वजह से शुगर कम हो जाता है। तो उन्होंने कहा भाई आप विस्की दे दो तो शुगर कम हो जाएगी। तो उस वक्त इसलिए विस्की इस्तेमाल करते थे कि और कोई चीज अवेलेबल नहीं थी। अब तो वो लोग भी इस पर्पस के लिए तो अल्कोहल नहीं पीते ना आजकल, वो तो एंजॉयमेंट के लिए पीते या जो कुछ है। बहरहाल उस जमाने में ये मेडिसिन के तौर पे 1960 की एक कटिंग है मेरे पास, 1916 की, यूके की अखबार की। उसमें लिखा हुआ है कि रिसर्च ने साबित किया है कि अगर अच्छी विस्की पियोगे तो आप डायबिटीज को ट्रीट कर सकते हो। तो ये उस जमाने की बातें हैं, आजकल की नहीं है। थैंक यू सर। डॉक्टर सईद अहमद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर ज़मान शेख, थैंक यू, जबरदस्त प्रेजेंटेशन। जो डॉक्टर साहब का क्वेश्चन था, इसको इस तरह करके अगर लिया जाए कि डॉक्टर ताहिर चौधरी की इसी फोरम पे एक प्रेजेंटेशन थी जिसमें उसने कहा था कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कोका कोला इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म ऑफ बियर, विस्की। उसके अंदर कोई ऐसे सेंसर्स नहीं है। तो ये भी एक नैश का एक वजह है। जो कोक हम पीते हैं ना, तो उससे भी ये नॉन फैटी लिवर, जो फैटी लिवर है, नॉन अल्कोहलिक में भी ये बन रहा है और होता है। तो फैटी लिवर जब होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहूँगा डॉक्टर ज़मान शेख साहब से कि जो एक नई टर्म है टॉफ़ी, उसके बारे में, जो थिन लीन पर्सन्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता दें तो ये इनका क्वेश्चन जो है मेरा ख्याल है एलेबोरेट हो जाएगा, जो पहले वाला था। क्या, सॉरी, रिपीट करें क्या आप क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन था कि टॉफी पेशेंट जो होते हैं, थिन लीन पर्सन्स, हाँ टोटल हाँ फैट अराउंड द विसरल या हाँ, ऑर्गन्स, सही ये सही, इसको भी, हाँ। तो हाँ ये जो पेशेंट होते हैं ये भी डायबिटिक तो होते ही हैं, हाइपरटेंसिव भी होते हैं, मेटाबॉलिक बिल्कुल, डिजीज एग्रीड भी होते एग्रीड, हैं, हाँ लेकिन हाँ। देखने में वो लगते नहीं है कि ये है इस तरह। साहब बिल्कुल तो आपने फिर सही कहा कि बिल्कुल, क्योंकि मेसेंट्री वगैरह में जो फैट होता है ना, वो इतना ज्यादा नहीं होता कि टमी बाहर निकल आए। तो अगर आप एमआरआई या सीटी कराएं तो पता चलता है कि भाई उस फैट की कंटेंट भी ज्यादा है। एंड दिस इज आल्सो, ये देखिए ना, ये सारे जो चीजें हैं ना, आपस में इंटर रिलेटेड हैं। मतलब कोई पहले शुरू होती है, फिर बाद में शुरू होती है, फिर बाद में शुरू होती है। ये आपस में सबका ताल्लुक है। फ्री फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, और फिर लिपिड टॉक्सिसिटी, ग्लूकोटॉक्सिसिटी, पेनक्रियाटिक फैट डिपोजिशन, लिवर फैट, ये आपस में सब मिले हुए हैं, विसरल फैट वगैरह। तो ये जब शुरुआत में देखे ना, ये थिन लीन वो होते हैं जो शुरुआत में होते हैं ज्यादातर, और वहीं से डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है तो डायबिटीज स्टार्ट हो जाती है। आई एग्री विथ यू डॉक्टर ताहिर। Thank you, Dr. Saab. Now I request Dr. Tariq Mahmood Mian for the concluding remarks and latest updates of the organization. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, रियली एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन और बड़े कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किए प्रोफेसर ज़मान शेख साहब। इट इज़ ऑलवेज प्लेयर टू लिसन टू यू, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप फैमिली कॉन में भी लाहौर तशरीफ़ लाएंगे और फिज़िकली लोगों से इंटरेक्शन भी करेंगे। मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर ज़मान साहब ने आज एक बड़ा एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किया कि हम हमेशा फैटी लिवर तक ही रहे थे, फैटी पैंक्रियास बहुत कम हुआ। और असल में मैं पिछले दिनों अदनान समी का इंटरव्यू देख रहा था, तो उसने, आप सोच नहीं सकते कि उससे पहले 4 बंदे मिलके उठाते थे और अब वो इतना थिन और इतना, और सिर्फ उसने डाइट पे कंट्रोल किया। शुगर में हमारे यहाँ डायबिटीज़ को पहले शुरू में क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज़ कहा गया और कहा जी ये तो कभी वापस हो ही नहीं सकती। लेकिन ये है कि अब ये पता चला कि ये तो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ये तो हमारे अपने करतूतों की वजह से ख़राब हमने किया अपने आप को, और अगर हम वो ठीक कर लें
तो डायबिटीज़ जो है ना वो रिवर्स हो सकती है। और अपना दूसरे डॉक्टर साहब ने जो एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि डाइट, एक्सरसाइज और बाकी थोड़ी सी एक मेंटेनेंस डोज के ऊपर अगर हम रखते हैं तो आज भी हम जो डायबिटिक्स हैं जो उनको काफ़ी हद तक हम रिवर्स नहीं तो कम से कम उन्हें ऑलमोस्ट नियर टू नॉर्मल हम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि प्रोफेसर ज़मान साहब का जो लो कार्ब डाइट और जो हम और जो जोर बहुत ज़्यादा दिया गया, पहले तो शुरू में ये था कि देसी घी और मक्खन ये शजरा ममनू है और सब लोगों को उससे हटा के तो कार्ब की तरफ ज़्यादा चले गए। और हमारे जो इंटरनेशनल अदारे हैं, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, दूसरे, इनकी फंडिंग जो है ना वो कोक और जितने बर्गर बनाने वाले वो कर रहे होते थे, तो नेचुरली वो उनके खिलाफ तो नहीं बोलेंगे। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अगर ये चंद बेशुमार मिसालें अब हमारे सामने हैं कि लोगों ने वेट रिड्यूस किया और हेल्दी डाइट के ऊपर आए, हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर आए, तो उन्होंने ना सिर्फ अपनी डायबिटीज़ बल्कि डायबिटीज़ से रिलेटेड जो 8 बीमारियां हैं उन सबको उन्होंने रिवर्स किया। तो मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि प्राइमरी केयर फिजिशियन जो है लोगों को प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ और डायबिटीज़ रिवर्सल के ऊपर ही काम करें। नो डाउट कि उन्होंने डायबिटीज़ को ट्रीट करना है, लेकिन यह है कि हम जैसे ये है कि हम अगर डायलिसिस यूनिट खोलते चले जाएं और शुगर और हाइपरटेंशन की हम स्क्रीनिंग ना करें और लोगों को उस लेवल पे ना कंट्रोल करें तो हम कितने एक डायलिसिस यूनिट बना लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रिवेंशन के ऊपर गवर्नमेंट की भी हमारी कभी प्रायोरिटी नहीं रही, इसलिए कि प्रिवेंशन के रिजल्ट आते हैं 15-20 साल के बाद। और एक डायलिसिस सेंटर बना दिया, ये एक कार्डियक इंस्टीट्यूट बना दिया, वो वाह 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 हो जाती है, वाह जी क्या बात है, गवर्नमेंट ने ये काम कर दिया। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम तमाम जो डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मिल के इस चीज़ के ऊपर काम करें। और अगर इंडिया का ये नारा दे सकता है जी कि हमें 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और 2047 तक हमने डायबिटीज़ फ्री इंडिया कर देना है, तो वाई नॉट पाकिस्तान। हमें, मेरा ख्याल है कि हमारा ये भी एक जिहाद है कि हम लोगों को सही बात बताएं। और हमारे जो आने वाली जनरेशन है जो कि अब बर्गर कल्चर, फिजी ड्रिंक्स और सीडेंट्री लाइफस्टाइल के ऊपर आ गई है, और डॉक्टर साहब ने बड़ा सही कहा कि ओबेसिटी जो है वो हमारे अंदर इतनी ज़्यादा आ गई है। तो अगर हमने इसके ऊपर काम ना किया, और हमारे बेशुमार स्कूल जो है वहाँ पे खेलने का कोई जगह ही नहीं है। और अगले दिन एक दोस्त कह रहे थे कि हमारे यहाँ एक पीटी शो के लिए एक आधे पौने घंटे की रिसेस होती थी जिसमें बाकायदा एक्सरसाइज कराई जाती थी। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। और बाहर के मुल्कों में देखें तो साइकिल चलाने के लिए आपके लिए अलग ट्रैक है, तो हमारे यहाँ तो फुटपाथ भी ख़त्म कर दिया गया कि आपने चलना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेडिकल प्रोफेशन को हाईलाइट करनी पड़ेंगी, अदरवाइज हम इन डिजीज़ को रोक नहीं सकेंगे। थैंक यू सो मच आप दोनों हजरात का जो इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन थी। तो मैं तमाम दोस्तों का जो ऑनलाइन है उनका भी और जो यहाँ मौजूद हैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं गेट्स फार्मा का बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने, देखिए आप मेडिकल प्रोफेशन में जो फ्रेंचाइजर घुस आए हैं तो ये भी समझ लें इसी तरह जैसे मुल्क में दहशतगर्द घुस आए हैं, इसी तरह हमारे जो फ्रेंचाइजर हैं उन्होंने आके लोगों को बाहर ले जाके और जो असल काम था कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन का उससे हटा के तो लोगों को ट्रिप लगाने ये शुरू कर दिए। तो मैं ये समझता हूँ असल काम ये है कि लोगों को एजुकेट करना ताकि इनडायरेक्टली हमारे पेशेंट का फ़ायदा हो, और इसमें हम गेट्स के इंतहाई मशहूर हैं। इसके अलावा मैं अपने फैमिली का आना हमारी आ रही है इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ, थोड़ा सा टाइम रह गया, तो 27 से 30 अक्टूबर तक 4 दिन का ये प्रोग्राम है। इस सिलसिले में कल हमने एक एग्जेक्टिव की मीटिंग बुलाई है और वो इंशाल्लाह आपको मैसेज मिल जाएगा। तो तमाम दोस्त, कल संडे है शाम को 8 बजे, तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम फ्लड के ऊपर काम कर रहे हैं
हमारी 5-6 टीमें ऑलरेडी जा चुकी हैं। आज हमारी एक टीम चारसदा और नौशहरा डॉक्टर नवीद भट्टी साहब के उनकी सरकर्दगी में वहाँ पे गई है। तो अब इंशाल्लाह जब तक ये पूरी तरह से ये रिहेबिलिटेट नहीं हो जाते, हम इंशाल्लाह इनके साथ हैं अपने भाइयों के। तो जो डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स इसमें जाना चाहें, उनकी इंशाल्लाह उनकी कन्वेंस का, रिहाइश का, फूड का और बाकी सारी सिक्योरिटी का वो इंशाल्लाह एक्सीलेंट अरेंजमेंट होंगी। तो आप प्लीज़ 3 दिन अगर आप निकाल लेंगे तो ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी इसका बहुत अजर मिलेगा। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए। बस इंशाल्लाह हमारा ऑलमोस्ट 1 महीने के करीब रह गया और प्रोग्राम नेक्स्ट जो है, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रेस हो क्या, हमने एक पूरा मॉड्यूल रखा है। जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो प्रोफेसर रियाज भट्टी वो डिप्रेशन और एंजाइटी और टेंशन और स्ट्रेस रिलेटेड इन रिलेशन टू डायबिटीज, वो एक पूरा सेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को होगा। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि उसमें तशरीफ लाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। Thank you very much. Khuda Hafiz.